Hello students, today I bring for you new chapter Molecular Basis of Inheritance. In this chapter we are going to solve a total of 84 questions which are coming in the previous 10 year, that is from 2013 to 2023 in NEET exam. So it is an important chapter, so let's start. Question number 1. Upon exposure to UV radiation, DNA stained with ethidium bromide will show bright blue color, bright yellow color, bright orange color, bright red color. Here your answer will be option number C, bright orange color. Okay, explanation. Recombinant DNA technology, the separated DNA fragments can be visualized only after staining the DNA with a substance known as ethidium bromide followed by exposure to UV radiation, and the color will show bright orange color. Okay, option C is the answer. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मैचिंग दिया गया है जीन ए, जीन स्मॉल वाई, जीन कैपिटल वाई, जीन जेड, एंड लिस्ट में दिया गया गैलेक्टोसाइडेज, ट्रांस एसिटाइलाइज, परमिएज, रिप्रेसर प्रोटीन. जीन ए इट कोड्स फॉर ऑप्शन नंबर सेकेंड ट्रांस एसिटाइलेज. जीन वाई it codes for permease. Gene capital Y it codes for repressor protein, and gene Z is the galactosidase. So according to this, option number A आपका आंसर होगा. Next question, question number third. Statements are given. You can see statement 1. In prokaryotes, the positively charged DNA is held with some negatively charged proteins in a region called nucleoid. Okay, well, this statement will be incorrect one. Statement second, in eukaryotes, the negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer to form nucleosome. Correct one. So statement 1 is incorrect, but statement 2 is true. Option C is your answer. Explanation. Statement 1 is incorrect because in prokaryotes the negatively charged DNA is held with some positively charged proteins in a region termed as nucleoid. Okay, that's why statement 1 is the incorrect one, and second statement is correct answer. Next, question number 4. Which one of the following is the sequence on corresponding coding strand if the sequence on mRNA formed as follows? सीक्वेंस क्या होगा? सो यहां पर देखो, mRNA स्ट्रैंड दिया गया है 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम तक. आपको बोला गया है कोडिंग डीएनए स्ट्रैंड बतानी है. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, लेंथी पे मत जाओ क्वेश्चन की. यहां पर बस आपको क्या करना है, यूरासिल की जगह जहां जहां पर यू लिखा हुआ है उसको रिप्लेस करके थायमिन को लगा देना है टी, और आपका आंसर हो जाएगा. जैसे कि 5 प्राइम ए यू सी दिया गया है, तो आपको बस क्या करना है, ए टी सी करना है, यू की जगह टी लगा देना है. तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए गलत. ओके, ऑप्शन बी की तरफ आते हैं. और यहां पर दिया गया जो है बी इज द करेक्ट आंसर, सी एंड डी आर द रॉन्ग वन. ओके, सो सिंपल क्वेश्चन था ये. क्वेश्चन नंबर 5. एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग ESTs refers to. They are refers to the option A, certain important expressed genes, all genes that are expressed as RNA, all genes that are expressed as proteins, and option D, all genes whether expressed or unexpressed. So according to this, option number B is the right answer. All genes that are expressed as RNA are called expressed sequence tag EST. Explanation.
All the genes that are expressed as RNA that are refers to EST. Question number 6. Unequivocal proof that DNA is the genetic material was first proposed by option A. Wilkin and Franklin. Option B. Frederick Cripps. Option C. Alfred Hershey and Martha Chase. And option D. Avery, McLeod and McCarthy. Here the answer will be first proposed by Hershey and Chase. Option C. Alfred Hershey and Martha Chase. They first proposed that the DNA is the genetic material. Okay. Next, question number 7. What is the role of RNA polymerase 3 in the process of transcription in eukaryotes? RNA polymerase 3 का रोल क्या है? ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्ट ऑफ ओनली snRNA. ऑप्शन बी transcription of rRNA, that is 28S, 18S, 5.8S. Option C, transcription of tRNA, 5S rRNA and snRNA. Option D, transcription of precursor of mRNA. So here RNA polymerase 3 का वर्क है a transcript, option number C, transcription of tRNA, 5S RNA, rRNA and snRNA. Okay, C option is the correct answer. अब explanation. In eukaryotes there are three major type of RNA polymerase: RNA polymerase 1, polymerase 2 and polymerase 3. RNA polymerase 1 transcribes 5.8S, 18S and 28S rRNA. सेकेंड, ये जो पहला बी वाला ऑप्शन था यहां पर, इट वॉज ट्रांसक्राइब्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज 1. ओके, आरएनए पॉलीमरेज 1. सेम नेक्स्ट वन, आरएनए पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्रिप्ट्स एचएनआरएनए, दैट इज द प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए. सो डी ऑप्शन में आपका आ जाएगा आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड और 3 का आंसर आपके सामने है ऑप्शन नंबर सी. ओके, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ टीआरएनए, 5S RNA, rRNA and snRNA and scRNA. Question number 8. The last chromosome sequenced in Human Genome Project was, last chromosome sequenced in Human Genome Project was, that is option number B, chromosome 1. Chromosome 1 is the largest human chromosome, was the last to be fully sequenced with the task not being completed until May 2006. This marked a significant milestone in human genetics. So chromosome 1 is the answer. Next, question number 9. Name the component that bind to the operator region of an operon, prevent RNA polymerase from ट्रांसक्राइबिंग द ऑपरन. उस कंपोनेंट का नाम क्या है? ऑप्शन ए प्रोमोटर, ऑप्शन बी रेगुलेटर प्रोटीन, ऑप्शन सी रिप्रेसर प्रोटीन एंड ऑप्शन डी इंड्यूसर. हियर द आंसर विल बी ऑप्शन सी, रिप्रेसर प्रोटीन. ओके, रिप्रेसर प्रोटीन इज द आंसर. इट इज द कंपोनेंट दैट बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ एन ऑपरन एंड प्रिवेंट्स RNA polymerase from transcribing the operon. Option C is the answer. Next question number 10. Statement दिया गया है, देखो. The process of copying genetic information from one strand of the DNA into RNA is termed as transcription. Okay. Statement 1 is the correct one. Statement second. A transcription unit in DNA is defined primarily by the three regions in the DNA, that is a promoter, a structural gene and a terminator. सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. तो यहां पर ऑप्शन ढूंढ लो जहां पर लिखा है बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ऑप्शन सी इज योर आंसर. ओके, बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 11. अगेन स्टेटमेंट पूछा गया है. स्टेटमेंट 1. RNA being unstable mutate at a faster rate. RNA being unstable mutate at a
faster rate. Okay, statement 1 correct है. Statement second, RNA can directly code for synthesis of proteins, hence can easily express the character. ये भी करेक्ट है, तो यहाँ पर भी सेम ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर द करेक्ट और ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. Which one of the following act as an inducer for lag operon? इंड्यूसर की तरह कौन काम करता है? सो हियर lag operon की बात हो रही है, तो क्या होगा आंसर? आंसर विल बी ऑप्शन बी, लैक्टोज. क्वेश्चन नंबर 13. With reference to Hershey-Chase experiments, select the correct statement. ओके, पहले ऑप्शन की तरफ देख लेते हैं, उसके बाद जाएंगे हम. पहले स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद ऑप्शन की तरफ जाएंगे. Hershey-Chase एक्सपेरिमेंट को देखते हुए करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है. पहला, virus is grown in the presence of radioactive phosphorus containing radioactive DNA. Okay, correct one. Virus grown radioactive sulfur containing radioactive proteins. This one also correct. Virus grow on radioactive phosphorus containing radioactive proteins. गलत हो गया. Virus grow on radioactive sulfur containing radioactive DNA. Wrong one. Virus grow on radioactive protein containing radioactive DNA. Wrong one. So A and B are your answer. Come to the options. Here are they. Option number B is your answer. A and B only. Explanation. In the Hershey-Chase experiments, they used bacteriophages and grew one batch in the presence of radioactive phosphorus P32 and another batch is the presence of radioactive sulfur S35. So A and B are the correct answer. Question number 14. In lag operon, Z gene codes for. Z किसके लिए कोड करता है? अभी हमने सॉल्व किया. Z gene codes for beta galactosidase. Option number B. Okay, Z gene codes for beta galactosidase and trans-acetylase coded by gene A, permease coded by gene Y and repressor protein coded by gene I. Okay, so Z gene codes for beta galactosidase. Question number 15. Statement. DNA polymerase catalyze polymerization only in one direction, that is 5 prime to 3 prime. Okay, ये आपका करेक्ट है. 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होता है. सेकेंड, ड्यूरिंग रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए ऑन वन स्ट्रैंड द रिप्लिकेशन इज कॉन्टिन्यूअस व्हाइल द अदर स्ट्रैंड इज डिसकॉन्टिन्यूअस. ये भी करेक्ट है. लीडिंग स्ट्रैंड, लेगिंग स्ट्रैंड, है ना. सो बोथ द स्टेटमेंट यहाँ पर भी करेक्ट है. सो ऑप्शन बी इज योर आंसर. बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. Explanation. The DNA dependent DNA polymerase catalyze polymerization only in one direction, that is 5 prime to 3 prime. This creates some additional complications at the replicating fork. Consequently, on one strand, the template with polarity 3 prime to 5 prime, the replication is continuous, while on the other strand, the template with polarity 5 prime to 3 prime, it will be discontinuous. अभी जस्ट कहा आपको लीडिंग स्ट्रैंड एंड लेगिंग स्ट्रैंड, ओकाजाकी फ्रैगमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. मैचिंग दिया गया, देखो मैचिंग. इन लैग ऑपरेंट आई जीन कोड्स फॉर. अगेन बार बार वही पूछ रहा है, तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन. देखो, इन लैग ऑपरेंट आई जीन कोड्स फॉर रिप्रेसर. ऑप्शन 4. Z gene codes for beta galactosidase. Option 3rd. Y codes for permease. Option 2. And A gene codes for option 1 trans-acetylase. So 4 3 2 1 ऑप्शन की तरफ आते हैं. 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70. Against the codon 5 prime UAC3 prime, what would be the sequence of anticodon on tRNA?
5 प्राइम UAC3 प्राइम। तो tRNA का एंटीकोडन क्या होगा? सो हियर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 5 प्राइम AUG3 प्राइम। Explanation: in the process of translation, the mRNA codon pair with the tRNA anticodon to bring the correct amino acids to the growing polypeptide chain. So 5UAC3 प्राइम का एंटीकोडन क्या होगा tRNA में? 5AUG3 प्राइम। Question number 18. If A and C make 30%, 20% of DNA respectively, what will be the percentage composition of T and G? ओके, सो यहां पर चार ग्राफ रूल लगा दो, सिंपल सी बात है। जिन्होंने कहा था अमाउंट ऑफ एडेनाइन इज इक्वल टू थायामिन एंड अमाउंट ऑफ साइटोसिन इज इक्वल टू ग्वानाइन, है ना। जब ए का दिया गया 30% तो टी भी कितना होगा? 30% होगा। एंड सी दिया गया है 20% तो जी क्या होगा? 20% होगा। सिंपल सी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर, टी 30%, जी 20%। ओके, चरगाफ रूल के हिसाब से ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19. The process of translation of mRNA to protein begins as soon as. Option A, the small subunit of ribosome encountered mRNA. बिल्कुल पहला ही आंसर हो गया, पहला ऑप्शन। ऑप्शन बी, द लार्ज सबयूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर्ड mRNA, गलत। बोथ सबयूनिट जॉइन टुगेदर टू बाइंड विथ mRNA. The tRNA is activated and the larger subunit of ribosome encounters mRNA. So ऑप्शन ए आपका आंसर होगा, द स्मॉल सबयूनिट ऑफ राइबोसोम encounters mRNA. Okay, explanation. When the small subunit of ribosome encounters an mRNA, the process of translation of the mRNA to protein begins. This process is followed by the binding of bigger or larger subunit. tRNA is activated by the addition of amino acids prior to the attachment or of ribosome in the first phase. So ऑप्शन ए आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20. DNA polymorphism forms the basis of. DNA polymorphism forms the basis of genetic mapping, DNA fingerprinting, both genetic mapping and DNA fingerprinting, translation. So here the answer will be option C, both genetic mapping and DNA fingerprinting. Polymorphism in DNA sequence is the basis of genetic mapping of human genome as well as DNA fingerprinting. So C is the correct answer. 21. Read the following statement, choose the set of correct statements. 5 स्टेटमेंट दिया गया, देखो। यूक्रोमाटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमाटिन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हेटेरोक्रोमाटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, गलत हो गया ये स्टेटमेंट। हिस्टोन ऑक्टामर इज रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज डीएनए इन न्यूक्लियोसोम, करेक्ट स्टेटमेंट। हिस्टोन आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनाइन, बिल्कुल सही। ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 400 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स, गलत। सो ए, सी एंड डी आर द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन। Heterochromatin is transcriptionally inactive. A typical nucleosome contains 200 base pair of DNA helix, not 400 base pair, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। And euchromatin is the loosely packed chromatin region. The negatively charged DNA is wrapped around the positive charged histone octamer to form a structure called nucleosome. And histone are rich in basic amino acids residue that are lysine and arginine. So option B is the answer. Question number 22. Transposons can be used during which one of the following? Transposons can be used during which one of the following? Polymerase chain reaction PCR, gene silencing, autoradiography, gene sequencing.
So transpositions can be used during gene silencing. Option B. Explanation. The source of the complementary RNA for RNAi could be mobile genetic element that are transpositions that replicate via an RNA intermediate. So option B is the answer. 23. Complete the flow chart on central dogma. फ्लो चार्ट को कंप्लीट करो. ABCD को आपको चूज करना है क्या. तो देखो ए वाला पोर्शन दिया गया है. ए क्या है आपका? डीएनए का क्या हो रहा है यहां पर? रिप्लिकेट कर रहा है. ये डीएनए रिप्लिकेशन. डीएनए टू एमआरएनए बन रहा है. तो किस प्रोसेस से बनेगा वो? ट्रांसक्रिप्शन. एंड एमआरएनए टू आगे बढ़ाइए प्रोटीन में कन्वर्ट होगा. डी का मतलब क्या हो गया? प्रोटीन. और सी का मतलब क्या होगा? एमआरएनए से ट्रांसलेशन प्रोसेस से प्रोटीन फॉर्म होगा. तो योर आंसर विल बी रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड प्रोटीन. सो ए ऑप्शन इज द रॉन्ग वन. बी की तरफ आते हैं. बी ऑप्शन रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड प्रोटीन. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. सी ट्रांसडक्शन गलत हो गया. रेप्लिकेशन ट्रांसडक्शन गलत हो गया. सो बी इज द आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. What is the role of RNA polymerase 3 in the process of transcription in eukaryotes? रोल क्या है RNA polymerase 3 का? ये भी क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया था. It transcribes tRNA, 5S rRNA and snRNA. So A will be the answer. Others are wrong one. Okay. Explanation. In eukaryotic cell, RNA polymerase 3, that is also called Pol3, transcribes DNA to synthesize the ribosomal 5S rRNA, tRNA and other small RNAs. The gene transcribed by RNA Pol3 fall in the category of housekeeping genes whose expression is required in all cell type and most environmental conditions. So this is your explanation. Next question number 25. DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific region in DNA sequence called as repetitive DNA, single nucleotide, polymorphic DNA, satellite DNA. So here option A will be your answer, repetitive DNA. Explanation. DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific regions in DNA sequence called as repetitive DNA, because in these sequences a small stretch of DNA is repeated many times. So A option will be the answer. Next question, you have to identify the correct statement. RNA polymerase binds with Rho factor to terminate the process of transcription in bacteria. Okay, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया. RNA polymerase binds with the Rho factor to terminate the process of transcription in bacteria. Second, the coding strand in transcription unit is copied to an mRNA. गलत. B statement. Option C. Split gene arrangement is characteristics of prokaryotes. Wrong one. Option D. In capping, methyl guanosine triphosphate is added to the 3' end of the hnRNA. ये भी गलत. तो करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर. बी स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों हुआ ना देखो. ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट बिकॉज द नॉन कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड इज कॉपीड टू एन एमआरएनए. नॉन कोडिंग स्ट्रैंड. ओके, यहां पर कोडिंग दिया गया इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया. ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट बिकॉज split gene arrangement is characteristics of eukaryotes, not in prokaryotes. And what is a split gene? Now, a split gene is an arrangement where coding genes are interrupted by a non-coding sequences. That is called split gene. Option D is also incorrect because in capping, 5-methyl guanosine triphosphate is added at the 5' end of hnRNA, and at the 3' end the poly A tail is added. तो जो दिया गया है मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट
is added in the 5' end of the hnRNA and 3' end में poly A tail is added. Next one, 27. If adenine makes 30% of the DNA molecule, what will be the percentage of thymine, guanine and cytosine in it? सेम आपका क्या यूज करना है, चारगाफ रूल फिर से यूज करो. यहां पर एडेनाइन का दिया गया है 30% डीएनए मॉलिक्यूल और अकॉर्डिंग टू चारगाफ एडेनाइन इज इक्वल टू थायमिन, ए इक्वल टू टी एंड जी इक्वल टू सी और सी इक्वल टू जी. एडेनाइन 30% है तो क्या होगा, थायमिन भी क्या होगा 30% होगा. अगर ये दोनों 30% हो गए तो बचा कितना 40% रह गया. 40 में से 20 कर दो, आपका ग्वानाइन 20%, साइटोसिन 20%. तो एडेनाइन 30, थायमिन पूछा है तो ये भी 30% होगा, ग्वानाइन 20% और साइटोसिन भी 20%. हो गया आपका. ऑप्शन बी इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28. Which is the only enzyme that has capability to catalyze initiation, elongation and termination in the process of transcription in prokaryotes? Which enzyme has this capability? DNA dependent RNA polymerase, DNA ligase, DNase and DNA dependent DNA polymerase. Here your answer will be option A, DNA dependent RNA polymerase. It is the only enzyme that has capability to catalyze initiation, elongation and termination in the process of transcription in prokaryotes. Next question number 29. Which of the following RNAs is not required for synthesis of proteins? Not required. tRNA required, rRNA also required, siRNA it is not required. So C will be your answer. mRNA is required. अब explanation, siRNA that is smaller interference RNA is involved in preventing the translation of mRNA to form protein. It is associated with pest resistance in plant by RNA interference. So option C is your answer. Question number 30. स्टेटमेंट दिया गया है, देखो अच्छे से. The codon AUG codes for methionine and phenylalanine. AUG codes for methionine and phenylalanine. ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया. स्टेटमेंट सेकेंड, AAA and AAG both codons code for amino acids lysine. ये करेक्ट है आपका स्टेटमेंट सेकेंड. So according to this, option C will be your answer. Statement 1 is incorrect but statement 2 is true. Explanation, AUG code for only methionine but not for phenylalanine, and second AAG and AAA are two codons for amino acids lysine. So C option is the correct answer. Question number 30. Which one of the following statement about histone is wrong? गलत ढूंढना है. द pH ऑफ हिस्टोन इज स्लाइटली एसिडिक. पहला स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग. हिस्टोन रिच इन अमीनो एसिड्स लाइसिन एंड आर्जिनाइन, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. ये तो करेक्ट है ही स्टेटमेंट. हमें रॉन्ग ढूंढना है तो पहला वाला ही क्या हो गया, रॉन्ग हो गया. हिस्टोन कैरी पॉजिटिव चार्ज इन साइड चेन, करेक्ट. हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स. हिस्टोन ऑक्टामेर कहलाता है, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है. तो जो पीएच ऑफ हिस्टोन इज स्लाइटली एसिडिक लिखा गया ये गलत हो गया, बिकॉज नेचर ऑफ द हिस्टोन इज बेसिक बिकॉज प्रेजेंस ऑफ आर्जिनाइन एंड लाइसिन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. Name the enzyme that facilitates opening of DNA helix during transcription. एंजाइम का नाम क्या है? डीएनए हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज. ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए हेलिक्स को ओपन करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है?
Now here your answer will be option C, RNA polymerase. Okay, RNA polymerase आपका आंसर होगा. During transcription, RNA polymerase facilitates the opening of the DNA helix and continuous elongation. Next question, question number 33. Which of the following statement is correct? Adenine pair with thymine through 1 H bond. Adenine pair with thymine through 3 H bond. Adenine does not pair with thymine. Adenine pair with thymine with 2 hydrogen bonds. So here option D is the correct answer. Adenine pair with thymine through 2 hydrogen bonds, and others are the wrong one. Next, question number 34. The first phase of translation is recognition of DNA molecule, amino acylation of tRNA, recognition of an anticodon, binding of mRNA to ribosome. So the first phase of translation is option number B, amino acylation of tRNA. Okay. Explanation. In the first phase of translation, amino acids are activated in the presence of ATP and linked to their cognate tRNA, a process commonly called as charging of tRNA or amino acylation of tRNA. So option B is the answer. Next question. If the distance between two consecutive base pair is 0.34 nanometer and the total number of base pair of DNA double helix in a typical mammalian cell is 6.6 into 10 to the power 9, यहाँ पर 10 to the power 9 होगा, okay, base pair. Then the length of the DNA approximately कितना होगा DNA का लेंथ ना, यहाँ पर आपका आंसर होगा 2.2 मीटर. अब इसको सॉल्व करोगे, 0.34 नानोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, फिर बेस पेयर, फिर लेंथ ऑफ द डीएनए, दोनों को मीटर में कन्वर्ट करने के बाद मल्टीप्लाई कर दोगे तो लगभग बेस पेयर कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36. चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग. करेक्ट पेयर आपको ढूंढना है. पॉलीमरेज ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रैगमेंट्स, गलत. न्यूक्लियस सेपरेट द 2 strands ऑफ डीएनए, ये भी गलत. एक्सोन्यूक्लियस मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विथ डीएनए, गलत है ये. लाइगेज जॉइन द 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स, डी इज द करेक्ट वन. ओके. एक्सप्लेनेशन. अब रॉन्ग क्यों हुआ ये देखो. पॉलीमरेज नेट सिंथेसाइजेस लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर्स और न्यूक्लिक एसिड्स. Nucleus, it breaks the DNA into fragment helicases, separate the 2 DNA strand. Exonuclease make cut at the terminals or end of the DNA sequence, and ligase, these are the enzymes which reconnect the 2 DNA molecules. So D is the correct pair. Question number 37. The term nuclein for the genetic material was used by. Nuclein was used by मेस्टर, चारकॉफ, मेंडल, फ्रैंकलिन. ऑप्शन ए आपका आंसर होगा मेस्टर. एक्सप्लेनेशन. डीएनए as an acidic substance present in nucleus was first identified by Friedrich Meissner in 1869. He named it as nuclein. Okay. Question number 38. In the polynucleated chain of DNA, a nitrogenous base is linked to the OH of. In a polynucleated chain of DNA, a nitrogenous base is linked to the OH of 3' pentose sugar, 5' pentose sugar, 1' pentose sugar, 2' pentose sugar. So here the answer will be option C, 1' pentose sugar. Explanation. A nitrogenous base is linked to the pentose sugar through a N-glycosidic linkage to form a nucleoside. The nitrogenous bases are purines or pyrimidines. Nitrogenous base is attached to the hydroxyl group of
1 prime pentose sugar. Okay. Next, question number 39. Which is the basis of genetic mapping of human genome as well as DNA fingerprinting? बेसिस पूछा है, देखो, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म में HNRNA सीक्वेंस, पॉलीमॉर्फिज्म RNA सीक्वेंस, पॉलीमॉर्फिज्म इन DNA सीक्वेंस. So basis of genetic mapping of human genome as well as DNA fingerprinting. So here the answer will be option number D, polymorphism in DNA sequence. Explanation: DNA fingerprinting is a technique for detecting genetic differences in people in a population. It is based on the polymorphism principle in DNA sequences. In the field of forensic science, genetic biodiversity and evolutionary biology, it is a wide range of applications. So D option is the correct answer. Next, question number 40. E. coli has only 4.6 into 10 to the power 6 base pair and complete the process of replication within 18 minutes. Then the average rate of polymerization is approximately. E. coli के पास इतने नंबर के बेस पेयर्स होते हैं और रेप्लिकेशन प्रोसेस को 18 मिनट तक टाइम लेता है. तो पूछ रहा है एवरेज रेट कितना होता है पॉलीमराइजेशन का. सो हियर द आंसर विल बी ऑप्शन डी, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड. ओके. 41. प्यूरिन फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए आर. डीएनए एंड आरएनए में जो प्यूरिन पाया जाता है उसका नाम क्या है? एडेनाइन एंड गुआनाइन. ऑप्शन बी इज योर आंसर. These two are the purines found in both DNA and RNA. 42. Under which the following condition will there be no change in the reading frame of following mRNA? No change in the reading frame of the following mRNA. 5 प्राइम से 3 प्राइम तक ये कोड दिया गया है, देख सकते हो. किस कंडीशन पर कोई बदलाव नहीं होगा? पहला ऑप्शन दे रहा है insertion of G at the 5th position. B, deletion of G from the 5th position. C, insertion of A and G at 4th and 5th position respectively. D, deletion of GGU from 7th, 8th and 9th position. तो कह रहा है यहाँ पर जो लिखा गया है GGU जो लिखा गया है इसको डिलीट कर देने से कोई बदलाव नहीं होने वाला. तो D is the correct answer. Explanation: a base insertion or deletion will not shift the reading frame if it is a multiple 3 mRNA of no change in reading frame of mRNA. So D option is the correct one. 43. Expressed sequence tag refers to. फिर से रिपीट हुआ ये. Expressed sequence tags refers to gene expressed as RNA. ऑप्शन ए आपका आंसर होगा. 44. Which the following feature of genetic code does allow bacteria to produce human insulin by recombinant DNA technology? ऑप्शन ए genetic code is not ambiguous. Genetic code is redundant. C, genetic code is nearly universal. And D, genetic code is specific. So here the answer will be option C, genetic code is nearly universal. Explanation: in recombinant DNA technology, bacteria are able to produce human insulin because the genetic code is nearly universal. This means the DNA sequence which codes for insulin will produce insulin protein whether it is present in bacterial cell or in a human cell. That's why this feature of genetic code allow bacteria to produce human insulin by RDT, recombinant DNA technology. मैचिंग दिया गया, देखो आई जिन जेड जिन, फिर से रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहा है ये 45 का. आई जिन कोड फॉर रिप्रेसर है ना. जेड जिन कोड्स फॉर बीटा गैल्कोसाइडेज.
A gene codes for trans-acetylase and Y gene codes for permease. So according to this 3142 ऑप्शन सी आपका आंसर होगा. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46. The experimental proof for semi-conservative replication of DNA was first shown in a fungus, bacterium, plant, virus. So here proof of the semi-conservative replication of DNA was first shown in a bacterium. Option B is your answer. Okay. Next is 47 number question. Select the correct match. Correct match आपको फाउंड करनी है. एलेक्स जेफरी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe गलत है. अल्फ्रेड हेर्सी एंड मार्था चेज टीएमवी बिल्कुल ही गलत. मेजर्स इंस्टॉल प्रिज्म सर्टिवम रॉन्ग वन. जैकब एंड मोनोड fertility. Jacob and Monod lack of run. Correct answer. So D option is the correct है. Correct मैच आपको पूछा गया है. Jacob and Monod lack of run and others are the wrong one. अब इनके करेक्ट वाला ढूंढते हैं. देखो पहले एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं. Lack of run was studied and discovered by Jacob and Monod to determine how a cell knows which enzyme to synthesize. This discovery won them the Nobel Prize. Alex Jeffrey goes to DNA fingerprinting. Hershey and Chase goes to blender experiment to prove DNA is the genetic material. And Measures install, it goes to semi-conservative mode of replication. So option D आपका आंसर होगा. Next is 48. कोड दिया गया है इसे सीक्वेंस फॉर्म फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ ए जीन. व्हाट विल बी द करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए. तो 48 यहां पर भी सिंपल सी बात है. आपको क्या करना है, टी की जगह यू लगा देना है. बहुत ही सिंपल है. इस तरह के सवाल भी हमने किया था. मतलब थायमिन की जगह यूरेसिल को रख देना आप और आंसर आपके सामने हो जाएगा. तो देखो कौन सा वाला मैच कर रहा है. पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे और ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा. 49. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ एन ऑपरेंड एक्सेप्ट एन ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन, एनहांसर, प्रोमोटर. ऑब्वियसली सी वाला आंसर होगा. एनहांसर नहीं होता है, बाकी तीनों होते हैं. ऑपरेटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है, प्रोमोटर होता है ना, बट एन एनहांसर नहीं होता. सो हियर ऑप्शन सी आपका आंसर होगा. तो एनहांसर का यूज कहां पर होता है. एनहांसर इज ए शॉर्ट रीजन ऑफ डीएनए दैट कैन बी फाउंड बाय एक्टिवेटर्स दैट आर प्रोटीन्स टू इंक्रीज द चांस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ए पार्टिकुलर जीन. ओके. नेक्स्ट इज 40. करेक्ट मैच ढूंढना है आपको. राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड, F2C plant dihybrid cross, TH Morgan transduction, Gregor Mendel transformation, and the correct match will be option A. Ribozyme is a type of nucleic acid. Ribozymes are ribonucleic acids that act as an enzyme and catalyst to the biochemical reactions. Others are wrong one. Okay, गलत. 51. The association of histone H1 with a nucleosome indicates transcription is occurring, DNA replication is occurring, the DNA is condensed into a chromatin fiber, the DNA double helix is exposed. So here it indicates that the DNA is condensed into a chromatin fiber. Okay. Explanation. Histone H1 or linker histone links two nucleosomes with each other and is a key player to determine the compaction state of a number of nucleosomes and influencing their conformation.
So option C is the answer. 52. The final proof for DNA as genetic material came from the experiments of. ये भी क्वेश्चन रिपीटेडली हुआ ये. आंसर क्या होगा? Hershey and Chase. Next question number 53. During DNA replication, Okazaki fragments are used to elongate. किस में Okazaki fragment यूज होते हैं रिप्लिकेशन में? ना यहाँ पर लीडिंग स्ट्रैंड में तो नहीं होंगे. तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, लैगिंग स्ट्रैंड, दैट इज अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्म. अभी देखते हैं एक्सप्लेनेशन 53 का. The process in which the DNA is replicated and two copies are synthesized is called DNA replication. It involves the formation of replication for the two strands of the DNA helix separate and the new strands are formed on the original strands known as the template strand. The strand which is synthesized in 3' to 5' direction is the leading strand, and the strand which is synthesized in the opposite direction is called the lagging strand, which contain the Okazaki fragments. This strand is synthesized away from the replication form, so option D is the answer. Next, 54 question number. Spliceosomes are not found in the cells of plant, fungus, animals, bacteria. So here the answer will be option D, bacteria, because spliceosomes are used in removal of introns during post-transcriptional processing of hnRNA in eukaryotes only, as split genes are absent in the prokaryotes, so it is absent in bacteria. 55. DNA fragments are positively charged, negatively charged, neutral, either positively or negatively charged. So here the answer will be DNA fragments are option B, negatively charged. Okay. DNA fragments are negatively charged because of presence of phosphate group. 56. If there are 999 bases in an RNA that codes for a protein with 333 amino acids and the base at position 901 is deleted such that the length of the RNA becomes 998 bases, how many codons will be altered? So इसको अगर प्रॉपरली आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? आंसर विल बी ऑप्शन सी 33. Next question number 57. Which of the following RNA should be most abundant in animal cell? rRNA, tRNA, mRNA, miRNA. So here most abundant will be option A, rRNA, ribosomal RNA. It is the most abundant in animal cell. It constitutes 80% of total RNA of the cell. 58. Select the wrong statement. DNA stores genetic information. Correct है. There is no enough evidence. No होगा, ठीक है ना? Now लिखा गया, इसको no कर देना. No enough evidence that essential process like metabolism, translation, splicing evolve around RNA. Correct है. DNA may act as a catalyst. DNA may act as a catalyst. गलत. मिल गया आपको आंसर, रॉन्ग वन. RNA can splice itself and is also able to act as a catalyst. बिल्कुल सही. So C option is the correct answer आपका. RNA act as a catalyst, not DNA. Next, 59. A couple claimed in court that a child belongs to them. Their claim can be true if the DNA fingerprint pattern of the child shows option 50% bent similar to father and 50% similar to another DNA fingerprint pattern. B. 100% similarity to both the parents DNA fingerprinting as both contributes equally to the zygote formation. C. 100% similarity to mother's DNA fingerprint because of maternal inheritance. D. 100% similarity to father's DNA fingerprint due to large number of mitochondria in sperm. So here, what will be the answer?
Now the answer will be option A, 50% bend similar to father and 50% similar to another DNA fingerprint pattern. Explanation: DNA fingerprinting is the basis of paternity testing as the polymorphism are inheritable from parents to children. Since a child receives half of his or her DNA from the mother and other half from the father, paternity can be established. So A will be the answer. 60. The technique of DNA fingerprinting is superior to conventional fingerprinting because it can be generated more rapidly and is inexpensive. गलत हो गया पहला स्टेटमेंट. दूसरे की तरफ आते हैं. Generate unique fingerprints for each finger. बी भी आपका गलत होगा. Compare the whole DNA sequence of two individuals. Wrong. Differentiate between polymorphic DNA sequence among individuals. D is the answer. Explanation: the repetitive DNA gets separated from bulk genome DNA as different peak by density gradient centrifugation. This bulk DNA forms a major peak and the other small peak are referred to as satellite DNA. The satellite DNA is further classified into many categories such as microsatellite, minisatellites, etc. These sequences normally do not code for any proteins and show high degree of polymorphism and form basis of DNA fingerprinting. So answer will be option D. Next question number 61. Which of the following enzyme is not a protein? Is not a protein. Ribozyme, polymerase, ligase, lysozyme. Here the answer will be option A, ribozyme. Ribozyme is a non-protein RNA molecule which is capable of catalyzing specific biochemical reactions. So ribozyme is the answer. 62. Consider the following statement and choose the correct option. 6 codons do not code for any amino acids. Codon is read in mRNA in a contiguous fashion. 3 codons functions as stop codons. The interior codon AUG code for methionine. तो यहाँ पर statement B, C, D are the correct one, and A is the incorrect statement, wrong one. So according to the options, option A is the answer. Explanation: in a genetic code, 61 codons code for amino acids and 3 codons are called stop codons, that are UAA, UAG and UGA. Do not code for any amino acids. The codons in mRNA are read in a contiguous manner with no punctuation. A base deletion and or addition can cause a shift in the reading frame, resulting in the frame shift mutation. AUG is the first or initiation codon of DNA that codes methionine amino acids in protein sequence. So ये था आपका explanation and option A आपका answer होगा. Question number 63. If the ratio of A plus G upon T plus C in one strand of DNA is 0.7, what is the same ratio in the complementary strand? सेम यहाँ पर नहीं रहेगा, बट द रेशियो पूछा है सिर्फ, ठीक है ना, सेम हटा दो. बट द रेशियो इन द कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड. क्वेश्चन को समझो अच्छे से, और यहाँ पर आपका रेशियो कितना आएगा, आप अगर सॉल्व करोगे तो 4 का फ्लोट लगा के A plus G upon T plus C equal to 0.7 और we can say 7 upon 10. तो यहाँ पर A plus G आ गया 7, T plus C आ गया 10. कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड में A equal to T and G equal to C, और यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो कुछ आपका कितना ऑप्शन आएगा, 10:7 कर दोगे, 10 upon 7 इसको सॉल्व करोगे 1.4285 और अप्रोक्सीमेटली
1.43. सो ऑप्शन डी आपका आंसर रहेगा. 64. DNA dependent RNA polymerase catalyzes transcription on one strand of the DNA which is called the alpha strand, anti-strand, template strand, coding strand. Here the answer will be option C, template strand. DNA dependent RNA polymerase catalyzes transcription on one strand of the DNA, that is called template strand. Okay. Next, 65. A molecule that can act as genetic material must fulfill the trait given below, except it should be unstable structurally and chemically, it should provide the scope for slow changes that are required for evolution, it should be able to express itself in the form of Mendelian character, and D, it should be able to generate its replica. So here except पूछा गया है, so A will be the answer. A molecule that can act as genetic material must fulfill the following criteria, and that are: it should be able to generate its own replica, it should chemically and structurally be stable, it should provide the scope for slow changes that are required for evolution, it should be able to express itself in the form of Mendelian characters. So A will be the answer. 66. The equivalent structure of a gene is, the equivalent of a structural gene is operon, recon, muton, cistron. Equivalent of a structural gene is option D, cistron. Okay. The equivalent structural gene is cistron. Cistron is a segment of DNA coding for a polypeptide. So D option is the correct answer. Question number 67. Taylor conducted the experiment to prove semi-conservative mode of chromosome replication on Drosophila melanogaster, E. coli, Vinca rosea, and Vicia faba. Taylor conducted experiment on option D, Vicia faba. Okay. Taylor and his colleagues in 1958, with the help of radioactive thymidine, detected distribution of newly synthesized DNA in the chromosome. This experiment was performed on Vicia faba. It is a type of faba beans. The experiment proved that DNA in chromosome also replicates semi-conservatively. So D is the correct answer. 68. Which of the following rRNA act as structural RNA as well as ribozyme in bacteria? So here the answer will be, पहला आंसर ऑप्शन सही है, 23S rRNA is the answer. The ribosome also acts as a catalyst for the formation of peptide bond. So option A is the answer. 69. Which among the following is the starter codon? स्टार्टर कोडन क्या होता है? पहला ऑप्शन ही सही है, AUG इज द आंसर. AUG इज द स्टार्टर कोडन. इसके दो फंक्शंस होते हैं, इट कोड फॉर मेथियोनाइन एंड इट इज ऑल्सो एक्ट एज इनिशिएटर कोडन और स्टार्टर कोडन. 70. Which the following is not required for any of the technique of DNA fingerprinting available at present? Not required. Polymerase chain reaction, zinc finger analysis, restriction enzyme, DNA hybridization. So here option B is your answer, zinc finger analysis. Explanation: zinc finger analysis is not required for any of the technique of DNA fingerprinting available at present because it is a test to check the presence of zinc binding in proteins that help to stabilize the fold of proteins. This analysis is not linked with DNA. So B is the answer. 71. Which of the following is required as inducer for the expression of lac operon? Inducer क्या होगा? Option C, lactose. Okay. Glucose or galactose cannot act as inducer for lac operon.
Regulation of lac operon by repressor is referred to as negative regulation. An inducer is a molecule that regulates the expression of a gene by binding with the repressor molecule, so that repressor cannot bind with the operator and transcription of molecule can take place. In other cases, an inducer binds with the activator to enhance transcription. Lactose is an inducer because it binds with repressor so that it cannot bind with operator and transcription continues. So C option is the correct answer. यहाँ पर देखो 72. In sea urchin DNA, which is double stranded, 17% of the bases were shown to be cytosine. The percent of the other 3 bases expected to be present in the DNA are. Same sea urchin of DNA दिया गया है 17% बेस हो गया साइटोसिन. साइटोसिन कितना हो गया 17%. तो यहां पर क्या होगा सेम चार्गाफ रूल यूज करो. एडेनाइन इक्वल टू गुआनाइन, थायमिन इक्वल टू साइटोसिन, है ना. सो और दूसरे वर्ड में और क्या कहा था चार्गाफ ने, एडेनाइन प्लस थायमिन प्लस साइटोसिन प्लस गुआनिन इक्वल टू 100%. तो यहां पर साइटोसिन का परसेंट दिया गया है 17, तो C इक्वल टू जी, गुआनिन का भी 17 हो जाएगा. तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, अगर ये दोनों 33 हो गए तो एडेनाइन और थायमिन कितना होगा, सॉरी ये दोनों अगर 17% हो गए तो एडेनाइन थायमिन कितना होगा 33% हो जाएगा. तो इसके हिसाब से आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका आंसर. चारों मिला के 100%, है ना. तो अगर यहाँ पर साइटोसिन और गुआनाइन 17% है तो एडेनाइन और थायमिन कितना होगा 33% होगा. तो ऑप्शन ए आपका आंसर. 73. Gene regulation governing lactose operon of E. coli that involves the lac-I gene produce product H. lac-I gene का प्रोडक्ट क्या है, देखो नेगेटिव एंड रिप्रेसिबल बिकॉज रिप्रेसर प्रोटीन प्रिवेंट्स ट्रांसक्रिप्शन. I gene product is negative and repressible because repressor protein prevents the transcription. बिल्कुल सही है, ये पहला आंसर ही सही होगा आई थिंक. बी में चलते हैं, देखो फीडबैक इनहिबिशन बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ बीटा गैल्क्साइडेज कैन स्विच ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, गलत हो गया. पॉजिटिव एंड इंड्यूसिबल बिकॉज इट कैन बी इंड्यूस्ड लैक्टोज, रॉन्ग वन. नेगेटिव एंड इंड्यूसिबल बिकॉज रिप्रेसर प्रोटीन प्रिवेंट्स ट्रांसक्रिप्शन, ये भी गलत है. तो ए आंसर सही होगा आपका, ठीक है. 73 ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन. एक्सप्लेनेशन. Inducible operant system regulates the genetic material which remains switch off normally but becomes operational in the presence of inducer. Example, lac operant transcription is under negative control and the lac repressor is inactivated by inducer. So option A is the answer. 74 question number. Satellite DNA is important because it, चार ऑप्शंस देखो. ऑप्शन है it shows high degree of polymorphism in population and also the same degree of polymorphism in an individual which are inheritable from parents to children. पहला ही आंसर सही हो गया. does not code for protein and is same in all member of the population, wrong one. code for enzyme needed to DNA replication, code for protein needed in cell cycle, wrong one. So A option is the correct one. Explanation. Polymorphism means variation at genetic level arising due to mutation is called polymorphism. These variations occur in non-coding regions of DNA and do not code for any protein but are heritable. The polymorphism in DNA is the basis of genetic mapping and DNA fingerprinting. So A option will be the answer. Question number 75. Identify the correct order of organization of genetic material from largest to smallest. लार्ज से लेकर स्मॉल तक आपको आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट ऑर्डर में रखना है इनको. तो क्या होगा,
largest genome, then chromosome, then gene, then nucleotide, and option B आपका आंसर होगा. Explanation: the genome is described as the genetic information repository of an organism. The genetic material, that is DNA, is packaged into thread-like structure called chromosome. Gene is the segment of DNA that codes for the protein, and nucleotide is the building block of the genetic material. Thus, the correct order will be genome, chromosome, gene, nucleotide. Question number 76. Which of the following biomolecule does have phosphodiester bond? किस बायोमोलिक्यूल के पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पाया जाता है? ना देखो, ऑप्शन मोनोसैकेराइड इन ए पॉलीसैकेराइड, ऑप्शन बी अमीनो एसिड्स इन ए पॉलीपेप्टाइड, ऑप्शन सी न्यूक्लिक एसिड इन ए न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन डी फैटी एसिड इन ए डाइग्लिसराइड. So here the answer will be option C. Okay, nucleic acid in a nucleotide is the answer. Explanation: backbone of DNA duplex is made up of sugar phosphate which are joined by phosphodiester bond, and nucleic acid in a nucleotide is the biomolecule that have phosphodiester bond. 77. Which of the following is not applicable to RNA? RNA के लिए कौन सा एप्लीकेबल नहीं है? तो क्या होगा यहां पर आंसर? RNA के लिए आपका ए स्टेटमेंट एप्लीकेबल है, बी ऑप्शन भी एप्लीकेबल है, हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेसिस, 4 का रूल एप्लीकेबल नहीं है, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग एप्लीकेबल है. तो नॉट एप्लीकेबल पूछा है, तो आंसर होगा आपका क्या? 4 का रूल. Okay, Erwin Chargaff made observation on the basis of the other DNA content equal to Chargaff rule, A plus G equal to T plus C, but this rule is not applicable in the case of RNA as it exhibits mostly as a single strand and has uracil base pair instead of thymine. So C option is the answer. Question number 78. Commonly used vectors for human genome sequencing are. Commonly used vectors for human genome sequencing are. क्या होगा ना? यहां पर आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, BAC एंड YAC. बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, these two are the human genome sequencing that are commonly used vectors. Okay, BAC and YAC. 79. Transformation was discovered by. Transformation was discovered by F. Griffith, Frederick Griffith. Option D is the answer. Okay. 80. Question number 80. An analysis of chromosomal DNA using the Southern hybridization technique does not use. Southern hybridization technique does not use PCR, electrophoresis, blotting, autoradiography. So here the answer will be option A, PCR. Explanation: PCR is not involved in the Southern hybridization. PCR is a widely used method for rapidly producing millions or more copies of specific DNA sequence that helps scientists to do their research and study by amplifying a small amount of DNA to a large sufficient amount. So A option is the correct answer. 81. Which one of the following is wrongly matched? Option A, operand, structural gene, operator and promoter. Transcription, writing information from DNA to tRNA. Translation, using information in mRNA to make protein and replace protein. Binds to operator to stop enzyme synthesis. Wrongly matched आपको ढूंढना है, गलत कौन सा है? So here option B is the wrong one. Okay. Explanation: transcription is the process by which DNA synthesis mRNA with the help of an enzyme called RNA polymerase. Thus it changes the information of DNA into mRNA, whereas the further information from mRNA to tRNA is provided by the translation process. So B is the answer, wrongly matched. Other three are the correct one.
84. Select the correct option. Direction of RNA synthesis and direction of DNA strand, template DNA strand. करेक्ट ऑप्शन कौन सा? सो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ना? ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट वन. 5 prime to 3 prime. इट इज द डायरेक्शन ऑफ RNA synthesis एंड टेम्पलेट DNA strand का डायरेक्शन क्या होगा? 3 prime to 5 prime. 83. The diagram shows an important concept in the genetic implication of DNA. Fill the blank A to C. A to C में blank fill करना है. ए वाला पोर्शन DNA to mRNA क्या होगा? DNA to mRNA by the process of transcription and mRNA to protein translation and protein के बाद क्या दिया गया? प्रपोज्ड बाय. किसने प्रपोज किया था? सेंट्रल डॉगमा को प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक. सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी. ओके, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन फ्रांसिस क्रिक. सेंट्रल डॉगमा वाज प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक. 84. लास्ट क्वेश्चन. Which enzyme will be produced in a cell in which there is a nonsense mutation in the LAC-Y gene? So here in a cell in which there is a nonsense mutation in the LAC-Y gene, here the answer will be option B, beta galactosidase. Okay, beta galactosidase. Explanation: the LAC-Y gene code for permease which increases the permeability of the cell to beta galactosidase. A nonsense mutation in Y gene causes generation of a non-functional permease. Okay, so B option is the correct answer, beta galactosidase. और इसके साथ हमने इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट 84 क्वेश्चन सॉल्व किए अभी. आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल करेगा नीट की प्रिपरेशन के लिए. सो प्रिपेयर करते रहिए अच्छी तरह से. मैं आगे और कुछ ऐसे चैप्टर्स लेके आऊँगा, नेक्स्ट चैप्टर्स जो है. तब तक लिए थैंक यू. जय जगन्नाथ.